Hi, good morning everyone. I hope you all guys are doing great. And let's wait for a minute and we will start the session. Yeah, hi, good morning everyone. My name is Varun Sharma and I'm representing ISI College which is in Quebec, Canada. So friends, आज हम लाइव हुए हैं टर्निंग पॉइंट के फेसबुक पेज से to share some new updates with you guys. It's updates regarding the COVID-19 कि जिन बच्चों का मई इनटेक के लिए वीज़ा आ चुका है, what are the options they have, because this is the most basic questions asked to me in these days. And we will also discuss about the ISI college and what are the programs we have for September intake and what are the requirements and what is the fee structure as well. सो जो स्टूडेंट्स ड्यू टू लॉकडाउन वो अपने काउंसलर या कंसल्टेंट के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो देखने के बाद अपना प्रोफाइल खुद असेस कर सकते हैं. वी विल ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द career opportunities after studying at ISI college, and we also discussed about that why should students choose Quebec over other province. So what are the benefits to study in Quebec, and some people's having a misconception about French in Quebec, and we will also discuss about French benefits in Quebec and how the French helps the student to get his permanent residency. So guys, first of all, I would like to thank the team of Turning Point who give me this wonderful opportunity to having an interaction with you guys. So as we all know that we are passing through a tough time and we should stay at home and stay safe, and we should follow the government guidelines and the guidelines issued by the concerned authorities or the WHO, that wash your hands regularly, maintain a proper hygiene, or if we are going outside we should maintain a social distance as well, because we can fight with this pandemic by maintaining a social distance only. सो गाइस, होपफुली जब हम नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे तब तक हम इस पैनेडेमिक से ओवरकम कर चुके होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे बेसिक क्वेरीज और क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं दीज डेज कि जो स्टूडेंट्स का मई इनटेक के लिए वीज़ा आ चुका है, व्हाट आर द ऑप्शंस दे हैव. तो मोस्टली स्टूडेंट का यही क्वेश्चन होता है दैट शुड दे डेफर, कि क्या उनको डेफर कर लेना चाहिए फॉर द नेक्स्ट कमिंग इनटेक. And I suggest each and every student, instead of getting a deferment, they should opt for the online classes. अब कनाडा की गवर्नमेंट ने भी एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि जिन बच्चों का मई और जून इनटेक के लिए वीज़ा आ चुका है एंड दे कैन फिनिश देयर 50% प्रोग्राम्स फ्रॉम देयर होम कंट्री एंड इट विल नॉट इफेक्ट देयर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, और इससे उनके पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग ए डेफरमेंट जिसमें स्टूडेंट्स का 3 से 4 महीने का जो है वो टाइम वेस्ट होगा, सो इससे बेटर है स्टूडेंट दे शुड गो फॉर दी ऑनलाइन क्लासेस. एंड लैपटॉप इज़ मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन क्लासेस, एंड ड्यू टू डिफरेंट टाइम जोन कई स्टूडेंट्स का ये भी क्वेरीज होती है कि वेदर दे शुड अटेंड क्लासेस ऑन अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट. नो, दे विल अटेंड द क्लासेस ऑन इंडियन टाइम जोन, एंड दे can record the session as well, and they will have a very easy access to the teachers as well. If they are having any questions or any queries, they can easily speak to their teachers. So guys, about ISI college, that is established in 1997 and accredited by the Ministry of Quebec government. So it's a 23-year-old institute and we are located in Montreal downtown. So we are sitting in the heart of the city center, and that is surrounded by the various hotels, motels and cafeterias. That helps the student to get a part-time job as well. In ISI college, we are offering 6 programs, out of which 5 are postgraduate programs and 1 is undergraduate programs. So student, if you guys having any questions or any queries, you can write it down in the comment section and I will answer all your queries. In undergraduate programs, we are having a web integration techniques.
सो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है दैट एनी स्टूडेंट हु हैज़ completed grade 12th in the stream of non-medical is eligible to apply in this program, or any student who has completed grade 10 plus 3-year diploma in computer science or IT with 55% overall marks, or any student who has completed grade 10 plus 3 years diploma in ECE, that is electronic communication, with 55% overall marks and 1 year of relevant work experience as well. The IELTS requirement for this program is, for SGS profile, is overall 6 band and no band less than 6, and for non SGS profile overall 6 and 5.5 in one module. कि SGS प्रोफाइल के लिए स्टूडेंट्स के आइल्स में 6 ईच बैंड होने चाहिए, और अगर एक मॉड्यूल में 5.5 हैं देन ओवरऑल शुड बी 6 बैंड फॉर नॉन SGS प्रोफाइल. और SGS प्रोफाइल की जो रिक्वायरमेंट है, इफ़ एनी स्टूडेंट हु हैज़ कंप्लीटेड ग्रेड 12th इन द स्ट्रीम ऑफ नॉन मेडिकल, तो उसके जो 3 कोर सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, सो इसमें उसका एग्रीगेट शुड बी 50% and not less than 43 in any core subject, कि उसके 43 से कम मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होने चाहिए. एंड इन केस ऑफ नॉन SGS प्रोफाइल, अगेन जो उसके 3 कोर सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इसमें उसका एग्रीगेट शुड बी 55% एंड नॉट लेस देन 45 इन एनी कोर सब्जेक्ट. सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द बैकलॉग्स, तो ये भी डिफर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ SGS एंड नॉन SGS प्रोफाइल. इन केस ऑफ SGS प्रोफाइल, वी आर एक्सेप्टिंग अप टू 8 backlogs in 3 years program, and we are accepting up to 10 backlogs in 4 years program. And in case of non SGS profile, we are accepting up to 6 backlogs in 3 years program and 8 backlogs in 4 years program. And in postgraduate programs, we having a programming and web technologies, video game programming, programming network and security, computer network and security, and computer project management. So all these programs are related to computers and IT, and all these programs are very interesting program for the international students, for those who wants to settle in Canada and who wants to earn in Canada, because these programs are not only give you a highly respectable job but also a very good pay package as well. To apply in these programs, students should have completed a 15 years of formal education with a background of IT and computers. इन स्टूडेंट्स ने who has completed any degree or diploma that is related to computer science or IT, लाइक उसने BCA किया हो, MCA किया हो, BSc IT, BTech in computer science और BTech in EC, or any other degree or diploma that is related to computer or IT, and he should get overall 55% marks. And for IELTS, we need a 6, not less than 6 for SGS profile, और अगर एक मॉड्यूल में 5.5 हैं देन वी नीड ओवरऑल 6.5 फॉर नॉन SGS प्रोफाइल. वी ऑल्सो एक्सेप्टेड PTE, TOEFL and Duolingo as well. In PTE, we need a score of 59 in postgraduate programs and 53 in undergraduate programs. And in TOEFL, we need a score of 79 and no band score below 20 in undergraduate program, and in postgraduate program we need a score of 88 and no band score below 20 to apply in postgraduate program. And in Duolingo we need 105 to 110 in undergraduate program and 125 to 130 in postgraduate programs. There is no application fee to apply in these program. The application fee is waived off, and the total tuition fee for the program is 29,504 Canadian dollar.
जो स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर यहाँ से पे करके जानी है दैट इज़ 14,752 कैनेडियन डॉलर्स. And all these programs comes along with the internships and the placement. और जो internships का period है that is 480 to 540 hours. And the maximum age to apply in this program is 28 years of age. And for computer project management, we need a 1 year of relevant work experience, and that is mandatory. And in postgraduate programs, we are accepting the gap up to 5 years without justification. And apart from the internship, every year a 3 jobs fair are conducted in the campus where student can present his CV for internships as well as for placement. Generally the internship will lead to the placement. And the job ratio in these jobs fair are more than 93%. So if you are going to the IT sector, you can find many ISI graduates who are working in the top ranked IT sectors like CGI, CN, CAE, Telecubic, Ubisoft, Gameloft and so on. And we are located in Montreal if you are talking about the career opportunities. And Montreal is an IT hub where more than 5,000 IT companies are operating at the moment. So students having IT and computers background, Montreal is heaven for them. And now the Google, Amazon, Facebook, IBM, they also set up their processing units in Montreal as well. So students having IT and computer background, there is an ample opportunities for them. So if we talk about that, why should student choose to Quebec over other province? कि students को Quebec क्यों जाना चाहिए? And there are numerous reasons to go to Quebec for the students. The first is the job opportunities. And as I told you, students having IT backgrounds, they are having ample job opportunities in Montreal. And Quebec is the second largest province of Canada. And they are the biggest manufacturers of railway carriages as well. So student having electrical background, they can find a heaps of job opportunities over there. And Montreal has the largest port of Canada, so it is a gateway for the European Union as well. So this is a very good logistic and transport sector as well, where student can go with part-time and full-time job opportunities. And there are more than 4,000 restaurants in Montreal where student can go for a part-time jobs as well. And there is a very good tourism industry in Montreal as well, and that more than 40,000 people who are working in the tourism industry in Montreal. So if you are checking the job portal of CIC Job Bank, then you can see the Montreal has the highest number of job opportunities in Canada. The second thing is the cost of living. The cost of living in Montreal is least in Canada, and the average cost of living in Montreal that is around $500 to $600 a month, and that includes everything, that your rentals, your groceries, your billings, your insurance, public transport pass, each and everything. So for example, if we're talking about the public transport pass, that costing $53 a month, that including metro trains, trams and buses. And the same public transport pass costing $130 in Ontario. So if you are talking about the car insurance, and that is mandatory in Canada, that everyone has to pay every month. A normal car insurance that costing $39 a month in Montreal, and the same car insurance costing between $350 to $400 a month in Ontario. That is 10 times more than that. So if you are talking about the French, there's some people having a misconceptions about French in Quebec. Yes, Quebec is a French state where majority of the people speak French. But in Montreal, due to the metropolitan city that hold the status of bilingual city, where people speak English and people speak French are almost equal in number. Student can survive in Montreal without learning French as well, but if he learns French,
It will give him an added advantage to explore more job opportunities and also to get his permanent residency. And now the Quebec government also took an initiative to provide a financial assistance or financial aid for the students who learns French. स्टूडेंट को जो फ्रेंच पढ़नी है दैट इज़ अप टू B2 लेवल एंड इट इज़ एन इंटरमीडिएट लेवल दैट इज़ कम्प्लीटली ओरल लिसनिंग एंड स्पीकिंग ओनली. इसमें स्टूडेंट को कुछ भी लिखकर टेस्ट नहीं देना है. एंड स्टूडेंट कैन लर्न फ्रेंच आइदर फुल टाइम, पार्ट टाइम और ऑनलाइन. In full-time French classes, student has to attend minimum 25 hours per week French classes. और इसमें स्टूडेंट को जो फाइनेंशियल एड मिलेगी दैट इज़ $820 अ मंथ. और जैसा कि मैंने बताया था द एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मॉन्ट्रियल दैट इज़ अराउंड $600 अ मंथ. सो जब तक स्टूडेंट फ्रेंच पढ़ रहा है और वो कोई भी जॉब नहीं करता है, स्टिल ही गॉट इनफ मनी फॉर हिज सर्वाइवल. और वो को बिना कोई जॉब किए $200 से $300 पर मंथ सेव कर सकता है. इफ़ एनी स्टूडेंट थिंक्स दैट ही इज़ गॉट अ गुड पार्ट टाइम जॉब और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 25 आवर्स पर वीक फ्रेंच क्लासेस अटेंड करे, देन ही कैन गो विद द पार्ट टाइम फ्रेंच क्लासेस एज वेल. इसमें उसको एक वीक में 9 से 12 घंटे तक की फ्रेंच क्लासेस अटेंड करनी है एंड ही इज़ गेटिंग $15 पर क्लास. एंड इन ऑनलाइन फ्रेंच क्लासेस इसमें स्टूडेंट को एक ऑनलाइन ट्यूटर अलॉट हो जाएगा जिसके साथ वो अपनी टाइमिंग मैच करके ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकता है. बट इसमें स्टूडेंट्स को कुछ भी फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल एड नहीं मिलेगी. एंड द नेक्स्ट थिंग इज हाउ द फ्रेंच हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू गेट हिज परमानेंट रेजिडेंसी. सो अगर स्टूडेंट ने B2 लेवल फ्रेंच कंप्लीट कर लिया है देन वो जो अपनी PR है वो अप्लाई कर सकता है अंडर PEQ कैटेगरी दैट इज़ क्यूबिक एक्सपीरियंस प्रोग्राम. इसके अंदर स्टूडेंट को सिर्फ 3 चीज़ सबमिट करनी होती हैं. स्टडी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सेकंड इज़ B2 लेवल फ्रेंच एंड थर्ड इज़ 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. वो इस वर्क एक्सपीरियंस में कोई भी रेलिवेंसी रिक्वायर्ड नहीं है. स्टूडेंट ने किसी भी फील्ड में काम किया हो उसका वो एक्सपीरियंस काउंट होगा. एंड ऑल दीज प्रोग्राम्स आर लेड टू 3 ईयर्स स्टे बैक पीरियड. यानी अगर आप ISI में कोई भी प्रोग्राम चूज़ करते हो तो उसके बाद आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा. तो जब ये आप 3 चीज़ सबमिट कर देते हो एंड आफ्टर दैट विद इन 20 वर्किंग डेज और विद इन 20 बिजनेस डेज स्टूडेंट को प्रोविंस की PR मिल जाती है. एंड आफ्टर ए ईयर दैट विल लेड टू फेडरल PR. यानी जो स्टूडेंट 18 साल का था वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में गया था तो टिल द टाइम ही टर्न टू 21 ही विल बी ए क्यूबिक PR. और जब तक वो स्टूडेंट 22 साल का होगा वो कनाडा का PR हो जाएगा. एंड वन मोर थिंग दैट वी डू नॉट एक्सेप्ट एनी डिस्टेंस एजुकेशन और एनी एक्सटेंडेड डिग्री. So guys, if you are having any questions or any queries, you can speak to the Turning Point Studies consultant. They are one of our official partner and they are having expertise in handling student visa. So if you wanna speak to me, you can inbox me on my Facebook or Instagram page. I'm saying again, you guys should stay at home and stay safe and don't let COVID-19 to be a hurdle for you to go to your dream destination. Thank you students. Best of luck for your future endeavors. Thank you.